Welcome to Target MHT CET series, guys. As we are nearing the CET 2022, and the students also preparing for 23 CET are pinging me daily to update videos on a regular basis. I've decided to just increase the frequency of my videos. एंड ऑल्सो जो क्वेश्चंस मैं डाल रहा हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करने का ट्राई करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे सॉल्यूशंस और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में आपको दिख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस मैं कवर करूँगा. सो प्लीज़ कीप फॉलोइंग, कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस टिल द एंड. ऑलराइट, लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 1. फिजिक्स लिया है मैंने आज, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स के लिए काफ़ी रिक्वेस्ट आए थे कि 2021 पेपर में का और पिछले जो भी CET हुए सारे स्लॉट्स में उसका प्लीज़ फिजिक्स कवर करा दीजिए, ठीक है. फिजिक्स से काफ़ी डर लगता है बच्चों को. ऑलराइट, सो लेट्स सी व्हाट ऑल क्वेश्चंस हैव कम एंड हाउ यू कुड हैव सॉल्व देम. आई वुड probably want you to pause the video first, try it on your own, ठीक है. गिव अ मैक्सिमम 1.5 minutes एंड सी वेदर आप वो प्रोसेस कर पा रहे हो, आपका नेक्स्ट स्टेप आ रहा है नहीं आ रहा है, एंड देन गो फॉर द सोल्यूशन दैट आई एम गिविंग यू. दैट इज़ द बेस्ट वे टू गो फॉरवर्ड, ठीक है. इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 1. A satellite is revolving around a planet in a circular orbit close to the surface, and rho is the mean density, r is the radius of the planet. So here you are essentially been supposed to calculate the period. So we have studied Kepler's law, right? Kepler's law, third law, and also Newton's law. We know that t square is directly proportional to r cube. We know this, or if we want to take out this proportionality, we have gotten this straight away formula as t square is equals to 4 pi square upon gm r cube, right? This is what we get after Kepler's third law and Newton's law. Or we can say that t taking square root on both the sides is equals to 2 pi root of r cube upon gm, correct, where r is the radius of orbit and m is the mass of planet, correct. Now over here what have they told us, that the satellite is very close to the planet, very close matlab this r is equals to r, that is the radius of the planet is equals to the this satellite's distance from the planet, r is the Now the next thing that we should keep in mind is the main formula that we are going to use, and the very basic one is mass is nothing but density times volume, right? We have studied this right from our school days, which is nothing but rho into 4/3 pi r cube. Why 4/3 pi r cube, guys? Because this is the volume of a sphere. We are talking about a planet over here, which is essentially a sphere, right? So mass is equals to this. Now if I just place this particular value of m in this particular formula, what am I going to get? Just place the formula over here, okay? You get 2 pi upon r cube g into 4/3 pi r cube. Alright, and we know that this r and this r is same, so we can just cut it, okay? Both the r's get deducted. Alright, and finally we get it in this way, is equals to 3 pi upon rho g. Now you will say where this 2 pi went, so this 2 pi and this 4 pi gets deducted because it's under the root. Hence the correct answer is option A. Let's have a look at the second question. In most liquids with rise in temperature, surface tension of a liquid, again a CET 2021 question, and I have covered this theoretical question because as a matter of fact this is a testable concept. इस पे काफ़ी टाइम एग्जामिनर्स को काफ़ी पसंद आता है ये टॉपिक टेस्ट करने के लिए, बिकॉज इससे एप्लीकेशन समझेगा आपको कंसेप्ट का. अभी लिक्विड्स, मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स में क्या होता है, द कॉज ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी इज द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इंटरमोलिकुलर या कोहेसिव फोर्स, उसके वजह से डायनामिक विस्कोसिटी होता है, राइट? अभी जैसे ही वी इंक्रीज द टेम्परेचर व्हाट हैपेंस, ये जो मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स हैं, राइट, लेट्स सपोज दिस इज all these are molecules of liquids close to each other, right? They tend to move away from each other, एक दूसरे से दूर जाने को ट्राई करते हैं वो, जिससे आपका कोहेसिव फोर्स कम हो जाता है, राइट? योर कोहेसिव फोर्स डिक्रीजेस बिकॉज इंटरमोलिकुलर जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से दूर जाते हैं, राइट? एंड हेंस डायनामिक विस्कोसिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. So basically what I'm trying to say is, with higher temperature, intermolecular forces amongst water molecules or liquid decreases.
Alright, the force decreases and hence surface tension also decreases. Option C is the correct choice. Let's have a look at the next question. Again, a very good question, and probably you should take a note of this particular question. 540 gram of ice at 0 degree is mixed with 540 gram of water at 80 degree. The final temperature of the mixture is. ठीक है, दो अलग अलग चीज़ें मिक्स कर रहे हैं अलग अलग टेम्परेचर पे. ठीक है, व्हाट आर दे आस्किंग इज फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर. एकदम मस्त क्वेश्चन है. ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, राइट, वी नो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री. नहीं पता होगा तो नोट डाउन कर लीजिए. ठीक है, M1 S1 delta T1 is equals to M2 S2 delta T2, where S are the specific heat, M is the mass and delta T is the difference in the temperature. ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू है 540. ऑलराइट, ये SW रहेगा विच इज़ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर ओनली. ऑलराइट, दोनों केस में वही रहता है. इनटू डेल्टा T1 जो यहाँ पे रहेगा 80 माइनस T. करेक्ट, फाइनल टेम्परेचर 80 है. राइट, पहले वाला टेम्परेचर हमको पता नहीं है जो मिक्स वाला टेम्परेचर है. करेक्ट, ये दिस इज़ व्हाट वी आर सपोज टू कैलकुलेट. इज इक्वल्स टू यहाँ पे भी 540 है. करेक्ट, आइस का वेट. और यहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट रहेगा वो SW/2 रहेगा फॉर आइस. ओके, कीप अ नोट ऑफ दिस. एंड डेल्टा T2 दैट इज़ फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर ऑफ आइस, T माइनस 0. ये फाइनल टेम्परेचर इसको हमको निकालने का है. राइट, यहाँ पे क्या होगा, ये कट हो जाएगा. करेक्ट, 540 कट हो जाएगा. व्हाट आर वी लेफ्ट विथ 80 माइनस T इज इक्वल्स टू T/W. और वी हैव 80 इज इक्वल्स टू दिस, T will come on this side and this becomes like this. So 80 is equals to 3T/2. Correct, or T is equals to 160/3 degree Celsius, and 160/3 is nothing but 53.3 degree Celsius. Let's have a look at the next question. Alright, capillary tube पे dependent है. Let's see. Water rises to a height of 3.2 centimeter in a glass of capillary tube. Find the height to which water rises in another capillary having half the area of cross section. Basically सबसे पहले तो इन्होंने क्या दिया है, half area of first capillary tube is equals to area of second capillary tube. Right, this is what they have given first. Alright, and this is nothing but half into pi r1 square is equals to pi r2 square. pi कट कर देते हैं. r1 square is equals to 2r2 square, और r1 is equals to √2 r2. Correct, this is what we have essentially relation between the first radius and the second radius, first capillary tube और second capillary tube का. Now for the same fluid, correct, same ही fluid है ना, for same fluid H1 R1 is equals to H2 R2. Alright, and what are we supposed to calculate over here, H2, right, water, find the height to which the same water rises in another capillary. Correct, so H2 is equals to H1 R1 upon R2. Correct, so I can write it as 3.2 into R1 के जगह √2 R2 लिख देता हूँ, और यहाँ पे R2 एज इट इज़ है. करेक्ट, R2 कट, तो 3.2 into √2 अगर आप कैलकुलेट करो दिस पर्टिकुलर वैल्यू, you would round about get 4.5 centimeter as your answer after properly calculating, which is option E. Let's have a look at the fifth question. Okay, this is based on your projectile. Angle of projection of a projectile for which a horizontal range and height attain same magnitude is. Again 2021 question. Okay, what are they saying over here, that your height is equals to your range. Correct, your height is equals to your range. Now one thing is very crucial कि आपको यहाँ पे height और range का दोनों का भी फॉर्मूला आना चाहिए. अगर ये नहीं आता है तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा. आता नहीं है तो अभी भी टाइम है, कर लो ये वीडियो देख के. ठीक है, नोट इट डाउन. सो हाइट आप लिख सकते हो u² sin square थीटा अपॉन 2g, एंड दिस इज इक्वल्स टू u² sin 2 थीटा अपॉन g. करेक्ट, अभी यहाँ पे क्या होगा, g और g कट हो जाएगा. करेक्ट, u² कट हो जाएगा.
ठीक है. What are we left with? We are essentially left with this trigonometric equation, that is sin square theta upon 2 is equals to sin 2 theta. Alright, sin 2 theta I can simply write it as 2 sin theta and cos theta. Simple trigonometric application लगा रहे हैं हम लोग यहाँ पे अभी, और ये as it is रहता है. करेक्ट, यहाँ से एक sin theta कट हो जाता है, ये कट हो जाता है. राइट, फाइनली what do I have? I have finally sin theta, और ये cos theta यहाँ पे लेके आता हूँ, अपॉन cos theta इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2, ये यहाँ पे आ गया 4. राइट, और tan theta is equals to 4 or theta is equals to tan inverse of 4. Hence C is the correct choice over here. Now guys, I've taken 5 questions over here. Oh no, I'm going to continue with that series, but there's something very important that I want to talk about in this particular video at the end. You know, I want to talk about your planning for your CET. Alright, how you need to go about it, especially the students who are appearing for 2022, and those who are appearing for 2023, please take a note of what I'm telling you. Firstly, HSC, देखो पूरा टाइम तो नहीं है अपने पास, but still you have got significant amount of time left, so please go through your HSC textbook like it's your Bible. Alright, please cover point to point, line to line, each and everything, understand it. Alright, memorize all the formulas that you need to, go through solved examples, and also do not forget to do the summary. Very, very important. Alright, after you have done that, then you can go to your MCQs, whichever publication you are using. I'm okay with it, I'm not going to comment on it, but MCQs में PYQs करना तो बिल्कुल ही मत भूलो. Alright, this is the most basic preparation that you should be doing for your next 30 odd days. I'm considering only 30 days from today, that is for your exam. I'm not considering the full stretch scenario, but in this 30 days you can cover a good 30 chapters at least. आई एम कंसिडरिंग कि आपने बाकी का करके रखा होगा. एटलीस्ट ये 30 चैप्टर्स आप दिन का एक भी चैप्टर करते हो तो भी यू आर इन अ गुड स्पेस. बट गिवन दैट यू गाइज मस्ट बी फ्री बाय नाउ, आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू डू अ मिनिमम ऑफ 2.5 चैप्टर्स. एंड व्हेन आई से 2.5 चैप्टर्स, आई डोंट से यू आर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड. एंड टू एंड कवर होना चाहिए आपका HSC का लाइन टू लाइन, और आपके MCQ सारे डाउट, सारे फॉर्मूले, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट शुड बी कवर्ड इन दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. So that's why I am just having 2.5 chapters. Now if you continue this for 30 days, alright, 30 into 5 by 2, that is 2. You'll easily cover your 70 odd topics that are there for your CET, that are testable topics. Apart from that, please continue testing yourself. Take regular testing, alright, give your mock test or whatever it is, but please do not get demotivated because of the scores that you are getting. देखो अभी डिसाइड तो कर लिया है हमने, कूदना है. करेक्ट, अभी मार्क्स मॉक में आए ना आए, हमें CET में मार्क्स लाने हैं. जितनी मिस्टेक करनी है, क्रिएट ऑल योर मिस्टेक का शीट इन योर मॉक्स. मेक श्योर दैट यू आर नॉट रिपीटिंग दिस मिस्टेक्स इन योर मेन CET. एज सिंपल एज दैट. So guys, in the next video, I'm going to come up with a very specific plan, day wise, for your preparation. If you want to receive a PDF regarding your daily planner and a mock analysis planner, please drop us a comment in the comment section, and I would do the same. Drop your email ID as well. Alright, our team will make sure that you receive those 2 files. Keep preparing hard, and all the best.